Okay, what is given in the seventh question now? Sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta that is equal to tan theta. ये हमको प्रूफ करना है. Yes, who will try this? बोलो. Who will try this? बोलो कैसे करेंगे हम लोग इसको. क्या मैं साइन थीटा कॉमन ले लूं ऊपर से, नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लूं? विल आई गेट समथिंग? यस, एनीवन? वी हैव टू ऑपरेट टू एलएचएस ओनली बिकॉज आरएचएस में सिर्फ एक ही टर्म है, उसको क्या ऑपरेट करेंगे हम लोग, इसलिए हमको एलएचएस को ही ऑपरेट करना पड़ेगा. बोलो. व्हाट वी शुड डू? Okay, first we will write LHS. No one is willing to give the answer. Sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta. So from numerator, I will take sin theta as common. So what is remaining now? 1 minus 2 sin square theta is remaining. Okay. From denominator, I will take cos theta as common. What is remaining? 2 cos square theta minus 1. ओके. तो देखो अभी हमको आरएचएस में क्या चाहिए, tan थीटा चाहिए. अभी देखो ये दोनों मिला के ही tan थीटा बना देंगे. दैट मीन्स दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट शुड गेट कैंसल्ड. हाउ वी विल कैंसल दिस टू ब्रैकेट्स नाउ? बोलो. आई एम गिविंग यू हिंट फॉर ईच एंड एवरी स्टेप. हाउ वी विल कैंसल दिस टू ब्रैकेट्स? बोलो. Sir, instead of 1 in numerator and denominator, we will write sin square theta plus cos square theta. Okay, so we will keep this sin theta as it is. यहाँ पे हम लोग 1 की जगह पे लिख देंगे cos square theta plus sin square theta. ओके, minus 2 sin square theta. और डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, cos theta we will keep it as it is. 2 cos square theta minus, हाँ, now we will have to put the bracket because minus 1 it is. और 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? cos square theta plus sin square theta. This step is very important. यहाँ पे ही गलती होती है maximum times. We forget to give the bracket here. Okay. Next, sin theta will be as it is. अभी यहाँ पे देखो sin square theta और minus 2 sin square theta, what we will get? cos square theta minus sin sin square theta. cos square theta minus sin square theta, क्योंकि प्लस 1 sin square theta और minus 2 sin square theta, net effect will be minus sin square theta. डिनोमिनेटर में भी देखते हैं अभी क्या होता है. 2 cos square theta minus cos square theta. So what we will get? Cos square theta minus sin square theta. Minus sin square theta, because this minus sign it will get multiplied inside.
So this plus will become minus here. So ये minus sin square theta हो गया. देखो अब ये दोनों चीजें same हो गई, तो we will cancel it. And what is sin theta upon cos theta? It is equal to tan theta. That is our RHS. tan theta. Okay, it was very easy. If you consider the angles also, no problem. You will get the answer in that case also. Shall we take that also by taking some value of some specific angle? Yes. Okay. First, you take the screenshot of this. Okay. बोलो कितना लेना है theta? What we should take? 30. Okay, fine. 30. Let theta is equal to 30 degree. तो LHS में क्या हो जाएगा? LHS में हो जाएगा sin 30 डिग्री. थीटा के जगह पे हर जगह 30 आएगा. माइनस 2 sin 30 का होल क्यूब. Okay, because here 2 sin cube theta it is. Upon 2 cos 30 whole cube minus cos 30. Tell me the value of sin 30. It is 1 by 2 minus 2 1 by 2 का whole cube upon 2 multiplied by, what is cos 30? Under root 3 upon 2. Under root 3 upon 2 का whole cube minus again cos 30, तो under root 3 upon 2. Okay, so 1 by 2 minus 2 by 8, it will become 2 by 8. What it is? It is 1 by 4. Yes or no? समझ में आया क्या आपको ये? I have written it directly. 1 by 2 का होल क्यूब 1 by 8 हो जाएगा. मल्टीप्लाइड बाय 2 करने के बाद ये 1 by 4 आ जाएगा. ओके, नाउ हियर व्हाट इज अंडर रूट 3's cube? What will be under root 3's cube? 9. Wrong. See, under root 3 cube means what? Under root 3 multiplied by under root 3 multiplied by under root 3. So 3 3's is 9. And again this root 3 is remaining. So this will come 9 root 3. Upon 2 का क्यूब 8 आ जाएगा. ये multiplied by 2 इधर as it is रहेगा. Is it clear to you this step? Sorry, it is root 3 into root 3. This is 3. So 3 root 3 it will be, not 9. Okay, 3 root 3 it will be minus under root 3 by 2. Okay, तो ये 2 1 जा 4 जा, तो ऊपर 1 by 2 minus 1 by 4, how much it comes? It will come 1 by 4, क्योंकि आधे में से क्वार्टर पार्ट अगर निकाल लेंगे तो क्वार्टर पार्ट बचता है. ओके, और नीचे 3 अंडर रूट 3 by 4 माइनस अंडर रूट 3 by 2. अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 4, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2. आई विल मेक द डिनोमिनेटर सेम. कर सकता हूं मैं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे डिनोमिनेटर को, तो मुझे न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा. सो सी हियर, आई एम राइटिंग इट हियर. 1 by 4 अपॉन 3 under root 3 by 4 minus 2 under root 3 upon 4. So now the denominator is same, 1 by 4. नीचे का डिनोमिनेटर सेम है. 3 रूट 3 में से 2 रूट 3 जाने के बाद कितना बचेगा? Root 3. रूट 3 बचेगा डिवाइडेड बाय 4. अब देखो ये 4 4 कट जाएगा because it is in the denominator. So ultimately what is remaining? 1 upon root 3 is remaining. Okay, so this is the value of LHS. and RHS में भी आप 30 डिग्री पुट करो. RHS में भी आप 30 डिग्री पुट करो तो क्या होगा? ये RHS is equal to tan 30. and what is the value of tan 30? It is 1 by root 3.
See, you got LHS is equal to RHS. Is it clear to you? See, बहुत से लोगों को लगता है कि ये काफी easy है to put the value and all, but here most of the time students make mistake while solving this. Okay, root and this terms. So this one is also not that easy according to me. इसको भी काफी संभाल के करना पड़ता है, जैसे कि अभी देखो यहाँ पे मैंने 9√3 लिखा था पहले. आई ऑल्सो मेक मिस्टेक समटाइम्स. So very slowly and very cautiously you have to handle the values here. Okay, next one. Who will tell me the next one? बोलो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? Any option? We will open the bracket by a plus b whole square formula. A plus B whole square formula for LHS part. Okay. Okay. You only tell me now, Harsh. I am opening the bracket. So sine A plus cosec A ka whole square. What it will become? Sine square A plus cosec square A plus 2 sine A multiplied by cosec A. Okay. Plus cos square A plus sec square A और प्लस 2 cos A multiplied by sec A multiplied by sec A. Okay. And what is cosec? किसका रेसिप्रोकल है cosec? Sin. और sec किसका रेसिप्रोकल है? Cos. तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप? sin square A plus cosec square A plus 2 sin A multiplied by 1 upon sin A. Yes or no? Plus cos square A plus sec square A plus 2 cos A multiplied by 1 upon cos A. So what will happen? This sign and this sign will get cancelled. This cos and this cos will get cancelled. Now I will write sin square A. उसके साथ में ही हम लोग cos square A को भी लिख देंगे. Plus cosec square A plus sec square A और ये +2 और +2 कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा ना? यस और नो? Yes, sir. हाँ, अभी हर्ष आगे बोलो मुझे क्या करूं? What should I do next? So then sin square a plus cos square a is 1. Correct. Cosec square a is 1 plus cot square a. So ultimately this will become what? 4 है यहाँ पे. 4 plus 1 ये 5 हो जाएगा. हाँ, और cosec square के जगह पे क्या लिखना है? 1 plus cot square a. 1 plus cot square है. Correct. और sec And square sec square a 1 plus tan square a. करेक्ट. आगे अभी देखो 5 plus 1 plus 1 that will give me 7 plus tan square a पहले लिखते हैं हम लोग और फिर लास्ट में cot square a. That is our RHS. Okay. Next one. Next one, what is given? Cosec a minus sin a multiplied by sec a minus cos a. It is equal to 1 upon tan a plus cot a. Simplify LHS and RHS separately.
The hint is also given to us. Tell me what will be the value of LHS when you simplify it. Come on, you do it. What will be the value of LHS after simplification? Sin A cos A. Okay. What about others? Only Harsh is solving. Okay, Shravani Shinde, you tell me the answer. LHS. I am taking LHS. Yes, sir. बोलो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? Sir, LHS is equals to Hmm. I have written the LHS. What we will do next? sir cosec A is reciprocal of 1 upon sin A Correct. minus sin A. In first bracket and second bracket. So sec A is so 1 upon cos A, as it is reciprocal of cos A. Okay, next. Then next 1 minus sin square A What we are doing upon here? so cross multiplication. Correct. We are doing the cross multiplication here. So in next bracket also cross multiplication 1 minus cos square A upon cos A. Correct. Next. What is 1 minus sin square A? So then we get cos square A because according to identity. Okay, it is cos square A upon sin A. And multiplied by, here it is the Sin product. square A Sin square A upon, upon cos A. okay. So here between these two brackets, there is a product because multiplication operation is there. So can we do it like this now? Cos square A के नीचे मैं cos A को लिख देता हूँ so that it becomes easy for us to get cancel the terms. Yes, sir. Okay, तो क्या बचेगा ultimately? So cos A and sin A. Cos A multiplied by sin A, correct. Now what about RHS? Shravani Argade, बोलो RHS. Shravani Argade. Can you hear me? Yes, sir. Yes, tell me the RHS part. Sir, tan A equals to sin A upon cos A and cot A equals to cos A upon sin A. So we will put the values. Okay. Next. We will do the LCM of it by cross multiplying. See, better way you do cross multiplication instead of taking the LCM. You will get the same values, but keep it simple. Do cross multiplication. So sin square A plus cos square A upon cos A Sin A cos A. multiplied by sin A. तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा? Sin square A plus cos square A is what? 1. Okay. 1 upon cos A multiplied by sin A. तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हर बार न्यूमरेटर में जाता है. देखो cos A
multiplied by sin A. Hence we can say LHS is equal to RHS. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? I think so. We are doing the last question of this chapter and this exercise. Okay, last question. चलो कौन बताएगा मुझे? Gauri, can you try this last one? गौरी सेवलकर, Yes, sir. बोलो. See, noise is coming a lot. Gauri, noise is coming a lot. Yes, someone else from boys, anyone? Only girls are giving the answers. From boys, only Harsh Chaudhary gave the answer. Yes, anyone from boys? Prathamesh Vallakatti. Prathamesh Kharath. Sir, is my voice coming? Now it's coming. Sir, here it is given 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A. So first we will solve LHS. See, here we cannot take LHS, RHS. Here we will have to take, this is my first part. Okay. This is second part. And this is third part. We have to show all the three parts as equal. Okay. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे first part is equal to 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A. बोलो क्या करेंगे हम लोग? Sir, we can write 1 plus cot square A is equal to 1 plus 1 upon tan square A. Okay. So you are converting this cot in terms of tan. So 1 plus tan square A numerator का as it is, denominator में आ जाएगा 1 plus 1 upon Cot tan square A. Okay, next. Sir, so after cross multiplication, it will become tan square A plus 1 upon tan square A. Upon tan square A. Okay. तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये tan square A, तो ये ऊपर आ जाएगा और ये कट जाएगा 1 plus tan square A, 1 plus tan square A. Yes or no? Yes, sir. So first part that is equal to third part. Now we'll take second part. Yes, sir. बोलो क्या करेंगे हम लोग? Sir, again we will write cot square A in terms of tans. 1 by tan square A. Okay, 1 by tan square A. Again we will do the cross multiplication. Yes, no? Yes, sir. So tan square A -1 आएगा यहाँ पे तो upon Tan A. oh wait here it is whole Sir, bracket it is square. square. Whole bracket square it is. Okay, wait a minute, let me erase this first. Okay, it is whole square. So 1 minus tan A upon 1 minus cot A का whole square है.
बोलो क्या करेंगे? Sir, we will write 1 minus tan A upon 1 minus 1 by tan A whole square. 1 माइनस 1 अपॉन टेन ए का ये सब का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए विल बी एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए Tan इसका होल स्क्वायर. ओके नेक्स्ट. A. Sir, if we take the denominator term in numerator, so it will become 1 minus tan A upon 1 into tan A upon tan A minus 1 का whole square. See, this is what now I am separating. I am separating the numerator and denominator. उसको whole square दे देंगे 1 upon tan 1 minus tan a का whole square upon tan a minus 1 का whole square, और ये डिनोमिनेटर में tan square a लिख देंगे हम लोग. हमने स्क्वायर जो पावर था वो हमने सबको इंडिविजुअली दे दिया अभी. ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट. अभी एक चीज कर सकते हो आप, यहाँ पे मुझे बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज a A माइनस square plus B square minus 2AB. a square plus b square minus 2ab, and if I do it like this, b minus a whole square, what it is? What it will come? B square plus A square minus 2BA. That is coming same only na. See this part and this part, it is same only. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर हो, वो सेम ही है. दैट मीन्स वी विल कैंसिल दिस टू डायरेक्टली एंड अल्टीमेटली दिस tan स्क्वायर a विल कम इन द न्यूमरेटर. समझ में आया क्या सब लोगों को? यस गौरी, यू Yes. mute yourself, Gauri. Is it clear to everyone how I have done this step? क्योंकि देखो हमारे पास है 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर और नीचे है tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल ओनली. हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, उसको जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ से. Okay, let me send the attendance link first. Mark your attendance fast. Tomorrow we will start the new chapter, that is areas related to circle. After that we will take probability and finally we will take real numbers.